Hi everyone, getting the highest placement on the campus is one of the dream for most of the students. तो एक तो पहला होता है कि जॉब मिल जाए, एक होता है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट मिल जाए, अच्छी जॉब लग जाए. सो वी हैव विद अस स्टूडेंट्स हु फाइनली गॉट प्लेस्ड एंड शी गॉट अ 9 लाख का पैकेज, हाईएस्ट पैकेज इन एचआर. ओके, 12 वाले लोग भी हैं, मार्केटिंग फाइनेंस वाले भी हैं. वो एचआर में दैट्स द हाईएस्ट बिकॉज दे नॉट इट्स नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन दैट फॉर सो मेनी ईयर्स. एचआर में इतना पैकेज लगाओ. So we'll talk to them about their journey, about their CET admission process. She waited for cap round to get over, तो A cap में जाकर admission लिया. So we'll talk about all these things. So we'll start the introduction first. Where you from and how much you got in CET? So my name is Payal Khabia and I am an MMS student of GNIMS Institute of Management Studies, which is Khalsa College. So I got 98.08 percentile in CET and I am from Mumbai itself, born and brought up in Mumbai. I have graduated from R.A. Poddar College of Commerce, which is at Matunga. And 98 percentile पे you joined Khalsa College. Yes. You didn't try it for the cap round 3 waitlist? So actually I got Khalsa College in the first cap itself. And I waited for the vacant round also. मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि तुम वेकेंट तक वेट करो. हाँ. अच्छा कॉलेज का हो गया होगा, बहुत बढ़िया. Yes. So I waited for that. I tried for V School, Wellingers. And but unfortunately, as I come in the open category, their cutoff for open category was 98.16 and I have 98.08 percentile. 98.16. Oh Yes. shit, missing by point 08. But ठीक है, anyway, Yes. you got the highest placement campus. Yes. तो उधर का इधर आपने निकाल लिया पूरा सारा. ठीक है, great. तो So hi, I'm Adarsh. I was born and brought up in Kolhapur. I entered this college through PGDM batch. I interviewed for it. I got the seat here. I completed. ठीक है, PGDM में MMS तो सिंपल कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होने वाला. PGDM का एडमिशन में यू हैव टू गो थ्रू इंटरव्यू. तो आपका इंटरव्यू हुआ था पूरा बकायदा? वो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू एडमिशन मिलता है? Yes, इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे आने के बाद. गॉन थ्रू वॉट एवर आई स्कोर्ड. एक छोटा सा शीट दिया था विच आई फिल्ड एंड आफ्टर माई असेसमेंट्स आई गॉट इनटू कॉलेज. Great. MMS का एडवांटेज है कि देयर इज नो इंटरव्यू, बट देन कट ऑफ आर रियली वेरी हाई दैट यू हैव टू लिटरली 98 पे आए यार. वो उसको देखो आप. तो PGDM का एडवांटेज है कि दैट इज द इंटरव्यू फेज, तो बट देन योर इंटरव्यू स्किल्स हैव टू बी स्ट्रांग. यू हैव टू देन पास द इंटरव्यू. दोनों की अपनी प्रॉब्लम, अपने एडवांटेजेस हैं. तो फाइनली HR क्यों लिया यार? बिकॉज हमने जो सुनने में आया है कि HR मतलब रंगोली बनाना और हाईएस्ट प्लेसमेंट HR को क्यों बनता है? सॉरी, दैट्स अ नॉर्मल misconception. So why HR, or what is the role of HR? So let me tell you my journey. So what I thought the same thing first, but I joined as a employee engagement intern at Taj, and I joined as a talent acquisition intern at Polycab. Also I got to know about holistic role of HR in any development of any organization. So whenever there is change management, HR plays a vital role. Whenever there is merger and acquisition of any companies, you see HR taking a major role in that part, because Correct. first thing you should match is policies of the companies. First thing you should match is pay scale of both. When you have two directors directing one company, company can't go in one direction, right? There are also manpower planning, that how much. They're also controlling attrition, because if you have trained workforce for longer time, that company is definitely going to go in longer time. Correct. So यार, if you ask me ना, कंसल्टिंग का काम HR का ही है. To That's very correct. frank, Sure. major role HR के पास कोई काम है ही नहीं. The problem is all these people who think wrongly about HR is they have not seen the MBA HR. Right. They see the low end jobs of HR. Right. Like once he join the company, he'll be leading a group of HR के और लोग भी होंगे आपकी टीम में. Yes. They might be doing a low end job. And जहाँ तक रंगोली का सवाल है, वो रंगोली HR वाले बनाते नहीं है, वो बनवाते हैं. बना तो नहीं रहे हो. बना तुम नहीं रहे हो, बट बनवाते हैं हमें. बनवाते HR वाले हैं. एक ट्रॉफी दे दिया, एक गिफ्ट दे दिया, उसके लिए पब्लिक वो कर रही है, ये सब काम कर रहे हैं. तो दैट इज द काइंड ऑफ एंगेजमेंट एक्टिविटी. आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड. तो सब उसमें तो HR इज अ गुड रोल इफ यू हैव द इंटरेस्ट. इट्स अ वेरी गुड रोल. बट HR को लेके मेरे को एक डाउट है यार कि ज़्यादा कंपनीज आती नहीं है कैंपस में. इफ़ यू कंपेयर विद मार्केटिंग, लाइक इफ देयर 100 कंपनी कमिंग को मार्केटिंग HR की 5 आएंगी. तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम. बट उतने लोग भी कम HR वाले ज़्यादा होते नहीं हैं. लेकिन मार्केटिंग में जितने बच्चे जाते हैं बैच में, HR में उतने बच्चे होते नहीं हैं. नहीं, दैट्स वन. तो उतना कंपनसेट हो जाता है. इट्स बैलेंस हो जाता है. बट इस साल अगर कंपेयर किया तो जितनी HR में आई है
एज़ कम्पेयर टू अदर स्पेशलाइजेशंस. HR में बहुत ज़्यादा आई है और आज भी आ रही है. इट्स नॉट लाइक प्लेसमेंट ख़त्म हो गया. इनफैक्ट दूसरे स्पेशलाइजेशन के लिए शायद नहीं आ रहे होंगे उतने जितने HR के लिए आ रहे हैं, बिकॉज आते हैं, सब में आते हैं. इट्स नॉट लाइक नहीं आते, बट कंपेयर टू लास्ट ईयर HR के लिए इस साल बहुत अच्छी आई है और बहुत कंपनी ज़्यादा भी आई है. ग्रेट. सो अभी मैं कॉलेज ज्वाइन कर लिया आपने, यहाँ पे आके क्या किया जाए कि दैट आई कैन गेट द हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑन कैंपस? सो मेरा ऐसा हुआ कि आई हैड डन माई इंटर्नशिप विद टाटा मोटर्स फाइनेंस फॉर 7 months बिफोर जॉइनिंग कॉलेज, एंड आई वॉज एन इंट्रोवर्ट पर्सन. So once I joined this college in the MBA program, MMS program, मैंने एक सोचा था I want to get into one of the committees of the college because I want to develop myself. And so I joined the social media committee, and I had no background in the social media. So I joined the social media committee, and from there, with no background in social media to becoming the social media head, that was a journey for me that taught me a lot of things. So right from leadership to delegating tasks, maybe even teamwork, collaboration with other committees, communication, how clearly and concisely you communicate with others, a lot of things, even adaptability, everything was taught to me when I was a part of the social media committee, and I am grateful for that to GNIMS. This is one advice to everyone कि if you join a committee तो आपको जॉब तो लगी जाएगा आराम से. Why? Because it's not because committee में आपको advantage मिलता है, but it's mainly because you are a selected member of the committee, right? There have to be some kind of election or some kind of interviews होते हैं by which you're selected. तो अगर आप अपने बैच में से if you're in the top 30, top 50 students, तो this means you are already good. तो कंपनी वाले भी देखते हैं चीज़ कि अगर तुम कमेटी में हो तो मतलब ये तो बेटर अमंग द, आई एम नॉट सेइंग कि जो कमेटी में नहीं अच्छे नहीं है वो भी अच्छे होते हैं, बट कमेटी वाले तो अच्छे हैं ही हैं, ये तो पक्का हो ही जाता है. So you have a better chance to convert. So once you join the college, it's good, always advisable to be a part of a committee. And other than academics, it is better to do something else, because academics तो आप पूरा 25 साल 26 साल आपका करते ही हो, but then something else, something extra which helps you develop your own self. That is very important in MBA especially. Correct. In one liner, participate as much as you can. Yes, participate. चाहे वो in पढ़ाई हो, sports. चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ भी एक्टिविटी हो. Yes, everything. When I was interviewing, they specifically asked me what are your co-curricular achievements and what are your achievements out of college. That was good that I belonged to a military hostel for 8 years. From 4 to 12 I was in a military hostel, so I've participated in a lot of sports. I'm state level volleyball player, I'm a district level rifle shooting and judo player, so that was covered up. I just spoke about it. But also I was placement committee member here. I also hosted a HR conclave in which I introduced everyone, all the guest panels. I wrote about it. So you have to also be open towards all the opportunities arising in college, and that will help you. I mean that helped me. Correct. Yes, never stop to grab the opportunity. You should always करेक्ट. be हाँ, open. वो जो अपॉर्चुनिटी मिलती करते जाओगे. यार लोग क्या बोलेंगे, ये क्या अगर भाड़ में जाए यार. इफ़ यू कांट टॉक इन फ्रंट ऑफ द 60 पीपल हु आर योर बैचमेट्स, कल को कॉर्पोरेट जाके तुम क्या कर लोगे? Right. तो वो डर निकालना है. 2 साल तुम टाइम है तुम्हारे पास डर निकालने के. Stage fear should not be there, because corporate में sharks बैठे हैं. They'll eat you up if you stop talking. Same day they'll lead you up. Yes. What was your improvement when you joined the college? So first of all, I improved my communication skills. As HR, you should be able to clearly communicate what you think. You should clearly engage everyone. You should maintain a rapport with all the stakeholders in the company. So first thing is HR. Second thing is I developed my interpersonal skills. Rather than communication, also how to maintain it in a longer duration. I talked with you, but later on building that network in long run, that's what helps HR. So for example, an HR business partner, that's his main job, to build a rapport with all the employees, so they'll not leave, and he'll contribute to lower attrition. Other than that, I improved my holistic knowledge in HR. It's not just about also learn about different operations in HR, in-depth knowledge about all the HR functions. That's what I improved here. So you have to improve. Nobody, once you join the college, nobody is born intelligent. You have to learn. You have to learn a lot of things. You have to learn. Like she was an introvert, and then she improved herself. You wanted your comm skills. You said you wanted to improve your comm skills. तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो आपको ना एमबी में आते पता चल जाएगा. मे बी बिफोर कमिंग हियर यू नॉट अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. इट्स नॉट प्रॉब्लम, दिस इम्प्रूवमेंट दैट यू नीड इम्प्रूवमेंट. तो आके एक बार तुमने इम्प्रूव कर लिया, देन गेटिंग अ जॉब इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम.
So it's not just about studies. दोनों ने studies का बात ही नहीं किया, but that's because it's assumed कि वो तो करना ही है. उसके अलावा क्या करना है? That is the main thing. That's a basic studies to complete करना है. If your grades are good, that means you already covered the basic part of it, the knowledge part. What extra you have put on, the above and beyond of what you already have. That's what companies look for, right? Correct. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.